सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम थोड़ा स्लो बात करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे। और यह जो कुल बात होगा आपके CUET PG प्रिपरेशन पे होगा, ठीक है। CUET PG ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के हों, हिस्ट्री के हों, इकोनॉमिक्स के हों, या किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, चाहे साइंस के हों, विल गो लिटिल स्लोली बट विल गो वेरी डीप। बी वेरी काम एंड बी विथ मी फॉर नेक्स्ट 5 to 6 minutes। देखिए, if you see that we are near to the end of 2023 and everybody would be some of would be busy with their semester examination। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट वीक से सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। सम ऑफ यू वुड बी प्लानिंग फॉर द न्यू ईयर, some of you are already doing well for the PG CUET PG preparation examination and all together the hustle everybody is doing। आप एक चीज़ ध्यान दें कि everybody is trying to grow, ठीक है। हर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, everyone, चाहे कोई किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे कोई किसी सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा करना चाह रहा हो, या कोई किसी अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा करना चाह रहा हो। ओके, ऑल टुगेदर the hustle culture is there, but one suggestion I would say, I would just give with my own experience, whatever you are doing, keep two kinds of goal. One is urgent goal, another is important goal. If your semester exam is from the next week, then not necessarily you should give all the time for the CUET examination preparation, then give your urgent priority। सो अर्जेंट मीन्स जो आप इमीडिएटली करने वाले हैं, विद इन ए डे, विद इन ए आवर्स, विद इन अ फ्यू वीक्स, दैट इज अर्जेंट। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग मीन्स विच कैन बी डन आफ्टर द अर्जेंट। तो व्हाट यू कैन डू, while doing urgent itself, you keep giving time to important as well, because that is the important। ठीक है, लॉन्ग रन में important हमेशा ज़्यादा important होता है। important वो सिंक कर गया। So people who are preparing for CUET PG examination, some of you would be preparing for UPSC examination, जो कि examination आपका मई लास्ट वीक में है 2024, and some of you would be also preparing for the semester examination। तो मैं उनको यह बता दूँ, आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए जस्ट विद इन ए वीक फिनिश कर दें एंड गो बैक टू योर CUET एग्जामिनेशन, बिकॉज दैट कैन हेल्प यू टू गेट इन टू योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। चाहे JNU हो, HCU हो, BHU हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। एंड even if your marks in semester examination is little lesser, suppose that you were scoring 8 CGPA, this semester you got 7 CGPA, it doesn't matter at all, but it would matter if you all together scored 9 CGPA, 8 CGPA, unfortunately you could not get through CUET examination because of paralyzed preparation। Don't do this paralyzed preparation, please। Last 80 days left, last examination dates are out, and we are very much sure this time NTA won't disappoint any of us। NTA will be taking examination on the time। please do it diligently। CUET के PY को करें, PYQ is very 80 days left हैं यार, you can do it, trust me। and please share this video among your friends who are planning for new year, या यहाँ चलते हैं वहाँ चलते, कुछ नहीं important। who told you to celebrate only on the 1st January? Who told? Every day is the celebration। Celebrate with your study, celebrate with your success, celebrate with your new targets, what you achieved। हाँ, 1st January को एक kind of formality what is there that everybody should do, एक दिन आप निकाल सकते हैं, but don't engross yourself, that is the big farewell party। The big party will be there when you will get enroll yourself in your dream university or in your listed university what you are trying for। Got it? So this 5 minute was just to make you priority। and many people were asking about eligibility। all the people, doesn't matter whether you are in the 5th semester, 6th semester, whatsoever, you must be enrolled in your final year of graduation। अगर आप BTech हैं तो it should be your final year। I am not talking of semester, please remember, I am talking of year। if you are doing graduation, be it honors, be it BA, you must be in the final year। yes, by June or July you must complete, 2024 must complete your graduation। that is the only eligibility। and the rest you can see that 50%, 60%, math compulsory, this compulsory, that are the different things, it varies institution wise। but NTA as a whole, if you see that you must be the final year students।
If you are passing in 25, then you are not eligible. But if you are passing in 24 in any month like May, June, July, you are absolutely eligible for UG's CUET examination, because your admission will be conducted in July. Examination will take place in March, but admission आपका वही जून जुलाई में होगा. ओके, सो थोड़ा स्लो हम गए इस बार. होप कि वीडियो वाज फ्रूटफुल गाइज. थोड़ा शेयर कर दें एंड थोड़ा अपने आप को काम रखें, कूल रखें. अभी हल्का आइसोलेट हो जाएं, अपने पे काम करें. वट एवर यू थिंक. 3 चीज़ तो मस्त है. नोट्स बनाना शुरू कर दें, PYQ देखना शुरू कर दें और एक एक सिलेबस की चीज़ों को पढ़ें. ठीक है. होप दिस योर वीडियो वाज फ्रूटफुल. मैं कीप कमिंग करूँगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, और नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. CUET PG इकोनॉमिक्स का कोर्स चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट. नो एडवर्टीजमेंट. 20 डेमो lectures are given below. Check it. चलो, see you. Bye bye. Take care guys. All the best for the